Biology, that is fundamental unit of life of chapter number 6. So far in this chapter we have discussed about the definition of cell, discovery of cell, then we have started parts of cell. In parts of cell we have discussed first part, that is cell membrane or plasma membrane, then second part we have discussed cell wall, and the third part of cell we have discussed about the nucleus. Now in this video we will continue with the fourth part of cell, that is cytoplasm. In that cytoplasm we have to discuss about the different cell organelles also. So first of all, cytoplasm. Cytoplasm is what actually, where it is present and how it functions. Now see, this is what a cell, diagram of a cell. So here I have drawn the outer covering. This is what I have written, cell membrane. And here I have drawn a nucleus. So cell membrane. So if a cell has the outer covering of cell membrane, then what type of cell it is actually? Yes, it is plant cell, it's animal cell. Why? Because animal cell has the outer covering of cell membrane or plasma membrane, while the plant cell have outer covering of cell wall. इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में और एक लेयर अगर और एक टाइप का सेल स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इसको हम बोलेंगे सेल वॉल. दिस विल बी सेल वॉल. सो हियर आई हैव मेड ओनली cell membrane, so it is what? The cell of animal. Now see, here the space between this cell membrane and the nucleus, or in some book you may find the space between this cell membrane and the nuclear membrane. Nuclear membrane means what? So nucleus के ऊपर में जो outer covering होता है, okay, that covering is called as nuclear membrane. So the space between cell membrane and the nuclear membrane or nucleus is called as cytoplasm. This is the semi-fluid substance. Here in cytoplasm has cytosol or semi-fluid substances. Okay, here many all the cell organelles are present. Now see, cell has to perform many activities. Okay, a single cell also has to perform various activities like digestion, respiration, synthesizing of energy, getting energy for energy, then many activities, many metabolic activities has to be performed. Now that activities, how they will be performing. So here in this cytoplasm, different cell organelles are present. That cell organelles will perform different activities. Okay. So here I have written a short definition here, the fluid and semi-fluid matrix of a cell between the nucleus and the plasma membrane containing various cell organelles is called cytoplasm. Okay, so this cytoplasm is present between the cell membrane and the nucleus. Okay, so here many cell organelles are present that will perform their own activities. So this is what cytoplasm, and cytoplasm contain many cell organelles. Now say, before going to the types of cell organelles, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसको पढ़ने से पहले सबसे पहला हम जानते हैं सेल किस टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ सेल. नाउ से हमने पढ़ा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल टाइप्स में, ठीक है, मानते हैं सेल क्या है, दो तरीका का ही है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. बट वो सेल में भी क्या है, टू टाइप्स है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल क्या है एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है. तो प्रोकैरियोटिक, यहाँ हम पहले मीनिंग को जानते हैं. प्रो मीन्स प्रिमिटिव और बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. ओके, बिफोर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस बनने से पहले जो प्रिमिटिव हो, पुराना, और जब
आज जैसे जो भी सेल है, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसको जब हम स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी दैट अंडर माइक्रोस्कोप, ओके, द सेल आर वेल डिफाइंड, their structures are well defined, the cell organelles are well defined. Now, but when the earth was formed, okay, millions and millions years ago, at that time the first organism formed was what? Single cell organism only. At that time the cell was not so complex. Nowadays animal have different plants and animal cell, means cells are very complex one, isn't it? But ये complexity कैसे बना? Simple से complex बना by evolution process. Evolution will be learning in class 10. Proper evolution means changes आना, not in sudden way, ठीक है? Regular way में क्या होना, धीरे धीरे क्या करना, changes आना, उसे evolution बोलते हैं. तो जब अर्थ फॉर्म हुआ था, अर्थ बना था, उसमें जब फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था, and that was single cell organism, and that cell was not so complex, it was simple, okay, where जो उसका सेल था, उस सेल का क्या था, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि सेल में न्यूक्लियस होता है, तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बना था, उसका जो सेल है, सेल तो बना बट न्यूक्लियस क्या था, वेल डिफाइंड नहीं था, न्यूक्लियस प्रॉपर्ली पता नहीं था, जो भी न्यूक्लियर सब्सटेंसेस था, ठीक है, तो वो क्या है, मैट्रिक्स जो था या सब्सटेंसेस जो में न्यूक्लियर मटेरियल्स जो भी थे, जैसे जो भी लाइक क्रोमोसोम्स वगैरह हो गया, डीएनए, तो वो क्या है, वो एकदम सिंपल सा न्यूक्लियस के अंदर नहीं था, न्यूक्लियस वाज नॉट प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाज नॉट प्रेजेंट, ओके. तो इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल्स था वो एक्सपोज था साइटोप्लाज्म में. सो हियर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो उनका सेल है वो एकदम प्रिमिटिव था, जिसका न्यूक्लियस क्या था, बनने से पहले, प्रॉपर न्यूक्लियस बनने से पहले प्रिमिटिव वाला था, प्रॉपर डिफाइन नहीं था. बट इन यूकैरियोटिक सेल, ओके, वेयर द सेल हैज डिफाइंड न्यूक्लियस, मीन्स जो यू का मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका न्यूक्लियस क्या होता है, एकदम ट्रू प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. सो यूकैरियोटिक सेल का फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ओके. नाउ नेक्स्ट इज जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, दैट आर वेरी स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू द यूकैरियोटिक सेल, ओके. उनका साइज कितना होता है, जैसे 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है, while the size of eukaryotic cell it ranges from 5 to 100 micrometer, okay, micrometer. Now say in prokaryotic cell nucleolus is absent. nucleolus क्या है, हमने पढ़ा था कि जो सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है. These are what thread-like structures are called as chromosome. While one dark spot you will see, okay, inside the nucleus, that is what nucleolus. So ये nucleolus क्या है, ये न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. तो यहाँ जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, जो न्यूक्लियोलस है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में. While in eukaryotic cell में क्या होता है, nucleolus is present, this nucleolus is present, okay. And the fourth point of prokaryotic cell, fourth difference is cell organelles absent. जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ये सब जो क्या है, एब्सेंट होता है, बट राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट,
बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are absent. While in eukaryotic cell, all the cell organelles are present like nucleus, mitochondria, ribosome, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, lysosome. This all cell organelles are present. Okay. While fifth difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell is this prokaryotic cell have only single number of chromosome. ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, while in eukaryotic cell more than one chromosomes are present. जैसे कि ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम्स होता है, ह्यूमन बीइंग में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या फिर इसको अगर हम पेयर में बोले तो 23 pairs of chromosomes are present in human being. Likewise in different animals or in different plants, okay, have different number of chromosomes. Understood? This is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Again I am telling you, don't be confused with it. पहले मैंने लिखाया था आपको टाइप्स ऑफ सेल में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है ना, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था. सो हाँ, प्लांट सेल्स टू टाइप्स का ही होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. बट जो वही प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, टू टाइप्स होता है. वन इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, अनदर इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स हैं जो प्रिमिटिव होता है, जो दुनिया में सबसे पहला जो ऑर्गेनिजम्स आया था, जो एकदम सिंपल फॉर्म था, एंड दे डज नॉट हैव देयर प्रॉपर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस बनने से पहले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे हो गया, अच्छा, बनने से पहले जो उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होके जो ऑर्गेनिज्म बना, जो सेल बना, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, देन यूकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ भी दो वर्ड से बना, यू एंड कैरियोटिक. यू मीन्स होता है ट्रू कैरियोटिक या कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. जैसे ह्यूमन सेल, ह्यूमन बीइंग में जो सेल्स है, एनिमल सेल्स जो अभी है, वो क्या है, हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं. न्यूक्लियस के ऊपर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर मटेरियल को, जैसे ये क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियोलस हो गया, इसको अच्छे से पैक करके रखता है, बट दैट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. व्हाइल इन prokaryotic cells are of a smaller size, while eukaryotic cells are of larger size. Okay, in comparison to this, now nucleolus is absent in prokaryotic cell, while nucleolus is present, and that can be seen under electron microscope. Okay, cell organelles except ribosome and mitochondria, all the cell organelles are absent. Okay, and here in eukaryotic cells all the cell organelles are present. Now say one more important is single chromosome. यहाँ जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो ये जैसे न्यूक्लियस में जो भी सब्सटेंसेस होता है, जैसे क्रोमोसोम्स हो गया, तो क्रोमोसोम ओनली one number of chromosomes are only present. Okay, single number of chromosomes are present, while in eukaryotic cell more than one chromosomes are present. Okay, और इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, देखो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोटिक, so that's why it is called as nucleoid. This nucleus is called as nucleoid. इसलिए इसका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. ओके, यहाँ जैसे देखो मैंने आपका एक रफली डायग्राम बनाया है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, एक डिफरेंस बनाया, ये पार्ट को मैंने लिया प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस पार्ट इज यूकैरियोटिक सेल. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें जो ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स क्या है, दिस क्रोमोसोम्स आर नॉट इन कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस में कन्फाइंड नहीं है, ये प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये एक्सपोज है इन द
cytoplasm. Ribosome is present and mitochondria will be present. Okay, here. And in eukaryotic cell, the proper nucleus is present. Proper nucleus present है. Nucleus के अंदर में ribosomes are present, nucleolus is present, different cell organelles are present in the cytoplasm. Understood? Clear? So this is the brief discussion about the cytoplasm. Now on the next class, in next video, we'll be discussing about the cell organelles. Cell organelles क्या है? Cell organelles. So in the next video, we'll be discussing about the cell organelles. Okay.